Okay, let's start the first chapter of your course. Marketing research is an introduction to the marketing research. अच्छा, मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है? फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और लास्ट ईयर आपकी सेल्स फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स थी और इस साल आपकी सेल जो है वो ड्रॉप होके 100 यूनिट्स पे आ गई है। तो आपको मार्केटिंग रिसर्च करना है, तो रीज़न यू हैव टू फाइंड रीजंस व्हाई दिस सेल्स हैव डिक्लाइंड। या एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके आपके टारगेट ऑडियंस कौन से होंगे, टारगेट कस्टमर्स कौन से होंगे, टारगेट मार्केट कौन सी होगी और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप यूज़ करेंगे उसको सेल्स करने के लिए, मार्केट करने के लिए। What is research? Research, in fact, is derived from a French word research. Re mean again, detail, real, factual, concrete knowledge and facts, course study. And search, search to investigate what? To investigate facts, phenomena, events, social problems, investment problems, scientific problems, individual problems, again and again. So, how can we define marketing research? Marketing research can be defined in many ways. There is not a single definition by which we can define the research. So, Green and Tull have defined marketing research as marketing research is a systematic and objective search for an analysis of information relevant to the identification and solution of any problem in the field of marketing. Or, in other words, we can say search for information that will help you succeed in capturing market share. So, if we look into this definition, marketing research, it has three keywords in the definition: systematic, objective, and analysis. Marketing research seeks to set about a task in a systematic and objective fashion. This means that a detailed and carefully designed research plan is developed in which each stage of the research is specified. Such a research plan is only considered adequate if it specifies the research problem in concise and precise terms, the information necessary to address the problem, the methods to be employed in gathering the information, and analytical techniques to be used to interpret it. सो रिसर्च में हमें एक सिस्टमेटिक वे में चलना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है प्रॉपरली और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. दिस इज मार्केटिंग रिसर्च. Now come to the purpose of marketing. There may be many purposes, but we are explaining few purposes of the marketing research here. Number one, easily spot business. We will discuss these one by one. Number two, lower business risk. Number three, create relevant promotional materials. Number three, number four, know where to advertise. Number five, outsell competitors. Number six, set better goals for your business. And number seven is decision making becomes simple. So if you go through all these things, then decision making becomes very easy, very simple. If you have all the information desired for research, you will make decision easily. First of all, we'll discuss easily spot business opportunities. After you have done your market research, it will be clear to you who you want to reach out to, means your target customers. Number two, where you can reach them, your marketing channels. Marketing channels कौन से होंगे and what they are interested in, और आपके जो targeted customers हैं
वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनकी नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है, ज़रूरियात क्या है. Once you have defined these, you will be able to easily spot business opportunities. For example, form partnership with other businesses. Suppose you are already marketing some products and you are marketing them in different regions, different areas of the country. So you find some educate or relevant people dealing in those products. You can form partnerships. For example, अगर वेव्स पहले लाहौर में, फिर उसके बाद कराची में, पिंडी में, देन सक्खर में फॉर एग्जांपल वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डीलर बेस्ड नेटवर्क बढ़ाएंगे. और डीलर्स इनफैक्ट एक तरह के पार्टनर्स होते हैं उस कंपनी के, जो वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही होती है. So if you have proper marketing research, you can form partnership with other businesses. Learning about who your customers are, such as their demographics, can help you find out small businesses that serve them. You can approach these business for joint promotions that will be mutually beneficial. Definitely, जब आप joint promotion की तरफ जाते हैं तो दोनों के लिए beneficial होगा, for the company and for dealers or for your partners. Number two, create profitable order upgrades. अब profitable orders upgrade क्या है? For example, you are already marketing air conditioners, refrigerators, deep freezers, microwave ovens, and washing machines. While marketing these products, you learn from the marketing research that the customers who are buying all these products, they also need small home appliances like juicer blenders and this juicers, blenders, and small geysers. Knowing the other products and services that your customers tend to buy can help you come up with add-ons, product bundles, and upsells that increase the average value of each order. For example, वही डीलर जो आपके फ्रिज, एसीज और डीप फ्रीजर बेच रहे थे, आप उनको स्मॉल अप्लायंसेस भी देते हैं, जूसर ब्लेंडर वगैरह, तो वो भी वो सेल करेंगे. आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि आपका सेल्स पर्सन वही है, आपकी ट्रांसपोर्ट वही जा रही है, तो आप उसमें ऐड कर देंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम ऑफ द ऑर्डर भी बढ़ जाएगा. फाइंड न्यू लोकेशंस टू सेल. Knowing the geographical areas where most of your target customers live will allow you to create compelling targeted campaigns that suit the needs and culture of that area. आप जब सेल कर रहे हैं किसी एक एरिया में और फर्स्ट कर दूसरे में नहीं है, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि वहाँ पे कोई भी कंपेटिटर्स या आप इससे पहले अपनी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर रहे थे, तो न्यू एरियाज वहाँ पे आप अपने लीडरशिप नेटवर्क बना देंगे. तो सो इजीली स्पॉट बिल्ड बिजनेस इज वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. Then comes lower business risk. So, as you have already learned, there is always risk in the business. You have chance of loss, chance of profit also both. So, around half of businesses with employees don't survive past the fifth year, according to data from the Bureau of Labor Statistics. The way to make sure that your business survives for longer is to ensure that you have got a steady stream of sales and customers. To do that, you need market research. अब रिसर्च से साबित हुआ है कि हमारे बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं 50% जो है पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं. उसकी वजह ये होती है प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च नहीं की होती, आपने रिसर्च नहीं की और मरी में जाके होम अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर्स एंड इस तरह की चीज़ें लॉन्च कर दी, और वो डेफिनेटली मरी में तो नहीं सेल होंगी. वो जो गर्म इलाके हैं आपके मुल्क के, सिब्बी है, शहजादकोट है, लाड़काना है, जैकोबाद है, इनमें ज़्यादा बिकेंगी. तो सो विदाउट
marketing research if you have launched any product that may go as failure. So regular market research will be your way to check in with your current customers and potential customers to ensure that you are still meeting their needs. Here's how you can apply this. अब रेगुलर मार्केटिंग रिसर्च जो है वो आपको अलाउ करेगी, आपको बताएगी कि कौन सी चीज़ कौन से इलाके में आपकी सेल हो सकती है, और उसी इलाके में ही आप उसको सेल करेंगे तो आपका बिजनेस रिस्क कम हो जाएगा। आपने अगर डीलर एक बढ़ा दिया मरी में या स्वात में एयर कंडीशनर बेचने के लिए, तो यकीनन वो लॉस में जाएगा और थोड़े दिनों में वो उसको शॉप बंद करनी पड़ेगी। वही बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं अपने मुल्क के गर्म इलाकों में, फॉर एग्जांपल जैकोबाद, लाड़काना, शहजाद कोट, सक्खर, तो यहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो यू कैन रिड्यूस द रिस्क बाय मार्केटिंग रिसर्च। टेस्ट न्यू डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट्स बिफोर लॉन्चिंग। जब भी कोई नई चीज़ आप लॉन्च करते हैं तो उसको आप पहले टेस्ट करेंगे। इसकी एक एग्जांपल एरियल वॉशिंग पाउडर है, जो कि 1989 में उन्होंने फर्स्ट एवर टाइम, अभी लॉन्च नहीं किया था, उन्होंने क्या किया, कुछ सेगमेंट ऑफ द होल मार्केट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने एक सैंपल के तौर पे ½ kg वॉशिंग पाउडर भेजा विदाउट एनी ब्रांड नेम, और लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। जब इस्तेमाल किया तो फीडबैक जब आया तो बहुत ज़्यादा, उस वक्त के एग्जिस्टिंग वॉशिंग पाउडर से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने जब देखा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, उसके बाद उन्होंने उसको ब्रांड नेम किया और एरियल के नाम से ब्रांड लॉन्च किया, और आज आप देखते हैं एरियल वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड इन पाकिस्तान। Before you go all in one, a dramatic change for your business, you can test it on a smaller subset of your audience to see if the change would be welcome. For example, if you plan to do a redesign of a popular product, show the new design to your most frequent buyers. Test or ask them if they are more likely to buy the new design versus an alternative new design or the old design. या तो आप नई चीज़ लॉन्च करने से पहले टेस्ट करेंगे अपने फ्रीक्वेंट कस्टमर्स के पास, या एक ऑलरेडी एक चीज़ आपकी बिक रही है और उसकी सेल डिक्लाइन होगी, उसको आप रीडिज़ाइन करते हैं, तो आप अपने फ्रीक्वेंट कस्टमर्स, जो रेगुलर कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स को आप पहले वो टेस्ट करेंगे कि ये चीज़ आपको कैसी लग रही है, ये ठीक है या पुराने वाले मॉडल ठीक थे। तो उससे लॉन्चिंग से पहले आपकी एक टेस्टिंग हो जाएगी। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। फाइंड आउट व्हाई कस्टमर्स डोंट कम बैक। ये आपने चेक करना है कि आपकी कुछ प्रोडक्ट्स पहले कुछ कस्टमर्स खरीद रहे थे, अब क्यों नहीं खरीद रहे। आपने उनसे पूछना है कि क्या ऐसे प्रॉब्लम हमारी प्रोडक्ट में आ गए हैं जो आपने हमारी प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर दी है। इसकी एक एग्जांपल ये है, हायर पाकिस्तान ने एक फ्रिज लॉन्च किया, जो पहले जो फ्रिज ऑलरेडी मौजूद था मार्केट में वो अच्छा बिक रहा था। ऑल ऑफ सडन एक फ्रिज जब लॉन्च किया, शुरू में बिका, उसके बाद उसकी सेल कम हो गई। जब हमने उसका रिसर्च की तो पता चला कि लोड शेडिंग के इलाकों में, जहाँ के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे इंटीरियर सिंध में या रूरल पाकिस्तान के एरियाज़ में लोड शेडिंग होती है, वहाँ जैसी बिजली जाती है तो बर्फ़ जो है इमीडिएटली पिघल जाती है विद इन 1 or 2 आवर्स। तो बाद में पता चला कि पहले वो फ्रीज़र पोर्शन में एल्युमिनियम की शीट यूज़ कर रहे थे, जिसमें वो बर्फ़ या उसकी जो आइस है स्टिक रहती थी इवन आफ्टर if the light is not available for longer time। और अब उन्होंने प्लास्टिक शीट यूज़ की थी तो उसकी बर्फ़ जैसे ही लाइट जाती थी बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती थी। तो लिहाजा आपने देखना है कि कस्टमर्स ने वो प्रोडक्ट आपकी क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा जी आप वापस एल्युमिनियम की शीट लगाएंगे तो ये ज़्यादा सेल होगा, अभी हमारे किसी काम का नहीं प्लास्टिक की शीट लगानी। Ideally, your small businesses should have recurring customers. If they don't come back, you can conduct a survey of previous customers or set up a focus group
to find out why you are not making any repeat sales. आप चेक करेंगे कि वो दोबारा परचेजिंग क्यों नहीं कर रहे, आपकी रिपीट सेल क्यों नहीं होगी। एक चीज़ आपने आपके कस्टमर ने खरीदी है, दोबारा वो क्यों नहीं प्रेफर कर रहा, वो दूसरे ब्रांड की तरफ क्यों जा रहा है। तो जैसे अभी मैंने हायर की एग्जांपल दी, तो यकीनन आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई फ़र्क आया होगा, या प्राइस में फ़र्क आया होगा, या किसी कंपेटिटर ने आपसे ज़्यादा बेहतर चीज़ मार्केट में लॉन्च कर दी होगी। जब आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वजह क्या है, और आप अपनी खामी को दूर करके उसको रीलॉन्च करेंगे या उसको रीडिज़ाइन करेंगे। Then third one is get insight on problem areas. If your most popular product sees a big drop in sales for the 3 consecutive months, you need to find out how to fix it before it ruins your profit completely. Survey your most frequent customers about the product and find out where the problem lies. It could be anything from a decline in the product quality or glitch on your online store. You will never know unless you ask. आपकी एक प्रोडक्ट सेल होते होते कम हो गई है, ज़्यादा सेल थी अब कम होगी। लास्ट ईयर एक 100,000 यूनिट्स सेल हुए थे पूरे पाकिस्तान में, और इस साल आपकी वो ड्रॉप होकर 70% पे आ गई या 70,000 पे आ गई है। तो आप कस्टमर्स जो आपके फ्रीक्वेंट कस्टमर्स हैं, पुराने बायर्स हैं, उनसे आप सर्वे करेंगे थ्रू डिफरेंट मीन्स, क्वेश्चन के ज़रिए फीडबैक लेंगे, रिव्यूज़ उनके देखेंगे, तो फिर आप उसकी अपनी गलतियों को दूर करके दोबारा उसको आप अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे। सो दिस वाज हाउ टू reduce your business risk. Then third one is create relevant promotional materials. So हम बात कर रहे हैं इस वक्त किस चीज़ की, पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। पहला था कि आप यू कैन स्पॉट business opportunities. Number two, lower businesses. And number three is create relevant promotional materials. If you have ever wondered what text or image to put on your flyer, website, or social media accounts, with thorough market research, you will know exactly what to do. Since target customers have already expressed all their wants, needs, and frustrations with you, you will know exactly what to address and how to address it when you start creating your marketing materials. जब आप मार्केटिंग मटेरियल्स लाइक फ्लेयर्स, टी शर्ट्स या प्रमोशनल मटेरियल आप बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, रिसर्च के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ को एड्रेस करना है। आपको कस्टमर्स की नीड्स का भी पता चल चुका है, उनकी प्रेफरेंसेस का भी पता चल चुका है, उनकी फ्रस्ट्रेशन का भी पता चल चुका है कि वो आपकी प्रोडक्ट क्यों छोड़ चुके हैं। तो जब आप मार्केटिंग मटेरियल तैयार करेंगे, तो उसपे कौन सा स्लोगन लिखना है, कौन सा टेक्स्ट लिखना है, कौन सी फ़ोटो देनी है, ये आपको आसानी हो जाएगी। किससे होगी? मार्केटिंग रिसर्च से। फॉर एग्ज़ाम्पल वेव्स पाकिस्तान ने 2003 में ऑब्ज़र्व किया कि अक्टूबर 2003 में उनकी सेल फ्रिज, फ्रीज़र, एसी की सेल डाउन हो गई, जो कि हमेशा ऑफ सीज़न में हो जाती है, जो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में सेल बहुत अच्छी होती है, जबकि फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सेल कम हो जाती है। तो हमारे जीएम साउथ ने क्या किया कि एक स्लोगन निकाला कि वेडिंग सेल के नाम से। वेडिंग सेल के नाम से बहुत ही हैवी किस्म की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, बिलबोर्ड्स पे, होर्डिंग्स पे, न्यून साइंस के जरिए। और उसके बाद वेडिंग सेल के नाम से जब ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की गई, तो उस साल पिछले 10 सालों से ज़्यादा रिकॉर्ड सेल हुई ऑफ सीजन में। तो दिस वाज द रिजल्टेंट ऑफ marketing research. Some other ways your marketing materials will be easier to create, knowing whether customers see your products and services as a necessity or a luxury. एक ये भी देखना है कि आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर देखता किस एंगल से है, कि क्या वो लग्जरी है, लग्जरियस आइटम है, या नेसेसिटी है। कैन हेल्प यू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट लेबल्स, brochures and website and fit their perceptions. उनकी परसेप्शन के मुताबिक आप अपने लेबल्स, प्रमोशनल मटेरियल तैयार करेंगे।
Identify the age range of your customers can tell you the type of language you will be using in your promotion materials. You will write differently when addressing retired baby boomers than you would when addressing young professionals. आपका जो टारगेट कस्टमर है वो देखता है कि रिटायर्ड बेबी बूमर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना प्रमोशनल मटेरियल पे उसका टेक्स्ट भी लिखेंगे, उसके इमेजेस भी पोस्ट करेंगे। तो सो तो थर्ड वन वाज क्रिएट रेलेवेंट प्रमोशनल मटेरियल्स, और दिस इज वन ऑफ द marketing research purpose. Then comes know where to advertise. This is one of the most important thing कि आपने एडवर्टाइज कहाँ करना है। One of the problem the small business owners face in limited budget. Because of this, your marketing budget should be optimized to give you the best returns possible. Your market research can help ensure that you are reaching your intended audience in the channels where they are most likely to see your message. अब आपने अपने टारगेट ऑडियंस को किस तरह से बताना है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या तब्दीली आई है या कौन सी नई प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है। आपने देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप अपनी एड्स इंस्टाग्राम पे प्लेस करेंगे। अगर वो फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे ज़्यादा करेंगे। अगर वो ट्विटर कभी यूज़ नहीं किया आपके टारगेट ऑडियंस ने तो ट्विटर पे अपने पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका एडवर्टाइजिंग बजट डेफिनेटली एक लिमिटेड होता है, कम होता है। आपने ऑप्टिमल यूज़ उस बजट का करना है। These are some of the budgetary tasks that your market research can help you. Number one, buying ads on social media. जैसे अभी बताया कि इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे कीजिए। ट्विटर पे अगर आपके कस्टमर्स हैं तो ट्विटर पे कीजिए। अगर ट्विटर पे कोई कस्टमर आपका नहीं है टारगेट ऑडियंस में से, माइनर सेगमेंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस ट्विटर पे है तो उसको छोड़ दीजिए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे कीजिए। Placing flyers and posters, knowing that physical spaces where your customers spend their time. अब फॉर एग्जांपल आपके टारगेट कस्टमर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना प्रमोशनल मटेरियल कहाँ प्लेस करेंगे? ऑफ कोर्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस के बोर्ड पे करेंगे, और जहाँ से स्टूडेंट्स दाखिल होते हैं या एंटर होते हैं उनको नज़र आना चाहिए। Targeting ads. Online ads such as social media ads and pay-per-click ads can often be targeted with precision. This means that you can target based not just on the usual demographic data, but also based on online behaviors, life stage, and interest. If you truly know your customers, you will be able to maximize the potential for targeting. अगर आप कस्टमर्स को सही तरह से जानते हैं कि वो आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ से चीज़ देखते हैं, कि ऑनलाइन कुछ ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर हर क्लिक के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे आप कीजिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को आगे करते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट अगर वन क्लिक पे पर क्लिक पे है तो वो ज़्यादा, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस जो है ना वेबसाइट का या सोशल मीडिया का ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को वहाँ पे करेंगे। अगर आपका फिजिकल ऐड पढ़ने वाले लोग हैं तो बिलबोर्ड होर्डिंग्स पे की तरफ आप जाएंगे। तो सो दिस इज हाउ यू नो वेयर टू एडवर्टाइज। और ये कैसे पता चलेगा? आपको मार्केटिंग रिसर्च से। अब आउटसेल कंपेटिटर्स, नंबर 5वां आपका जो मार्केटिंग रिसर्च का पर्पस है, आउटसेल कंपेटिटर्स। The business that knows their customers more tend to win more. जो अपने कस्टमर को ज़्यादा जानते हैं लोग, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं अपने बिजनेस में। If you can beat your competitors at finding out your customers' needs and your aims to fulfill those needs, you have got a better chance of standing out from the competitors. अगर आप कस्टमर को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी नीड्स को जानते हैं, उनकी डिज़ायर को जानते हैं,
उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को जानते हैं कि कैसे सेटिस्फाई होते हैं, तो फिर आप अपने कंपेटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ जाएंगे और आप सबसे ऊपर, मतलब यू विल बी स्टैंडिंग आउट। अपनी चीज़ को बेहतर बना के पेश कीजिए जो उनकी नीड्स को एड्रेस करे। There are some ways you can use market research to outsell competitors. Number one, target dissatisfied customers. Number one, asking target customers about their frustration with your competitors' product or reading their products reviews can help you improve your own products and market them to an audience ready to switch brands. अब आप अपने सबसे पहले टारगेट सेट डिससेटिस्फाइड, कि आपकी चीज़ वो खरीदते थे, आपके एसीज खरीदते थे, आपके रेफ्रिजरेटर्स खरीदते थे, अब उन्हें छोड़ दिए, डिससेटिस्फाई है। वजह जैसे अभी मैंने हायर की एग्जांपल दी है, उनसे आगे जाके पूछें कि आपने हमारी प्रोडक्ट क्यों छोड़ी। एक जवाब आएगा कि हमने आपकी फ्रिज खरीदी थी, बिल्कुल अच्छी है, जब उसमें प्रॉब्लम आया, ख़राब हुआ, तो हमने आपके कस्टमर केयर सेंटर पे रिंग किया, उन्होंने प्रॉपरली जवाब नहीं दिया और आइंदा हमने आपकी प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दी। ये आपको पता चल गया। तो व्हाट विल यू डू? आपको रिसर्च से पता चला कि आपका आफ्टर सेल डिपार्टमेंट या कस्टमर केयर डिपार्टमेंट प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहा अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे। या उन्होंने बताया जी अब क्वालिटी आपकी वो नहीं रही, आप उसको इम्प्रूव करेंगे। या किसी ने बताया कि आपकी प्राइस मार्केट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंपेटिटर से आपकी प्राइस ज़्यादा है, दूसरों का रेफ्रिजरेटर 30,000 का आ रहा है, आपका 40,000 का आ रहा है, हमारी परचेजिंग पावर से बाहर जा रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी प्राइस को एडजस्ट करेंगे टू compete the competitors. Number two, find an underserved customers segments. अब आपने देखना है, your market research might reveal that there is a segment of the market that your competition has neglected. This will give you a new customer segment to reach out there. आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट कहीं और भी बिक सकती है। अब तक आप शदादकोट, लाड़कला, जैकोबात और सक्खर में कर रहे थे, आपने देखा कि रुस्तम मोहम्मद में तो कोई डीलर ही नहीं है हमारा। वहाँ पे आप अपना शोरूम खोलेंगे, अपने पार्टनर बनाएंगे, तो वहाँ पे आपकी एक चीज़ें सेल होना शुरू हो जाएंगी। तो सो अंडर सर्व्ड कस्टमर्स को भी आप टारगेट करेंगे। आइडेंटिफाई अनएड्रेस्ड कस्टमर्स नीड। अब ड्यूरिंग योर मार्केट रिसर्च यू माइट अनकवर सम कस्टमर्स पेन points or desire that you don't see addressed in your competitors' marketing materials. Try including them in your own marketing and see if the result show an increase in sale. अब आपने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कस्टमर की नीड है, जो आपका कंपेटिटर भी उसको नहीं देख रहा। आपने रिसर्च से पता किया कि जी हमें तो वो फ्रिज चाहिए जो कि कम वोल्टेज पे चलता हो, जैसे कंदकोट में है, शदादकोट के रिमोट एरियाज में है कि वोल्टेज कम होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके रेफ्रिजरेटर को ऐसा बनाना है कि उसके स्टेबलाइजर की जरूरत ना पड़े, जो कि कस्टमर की नीड ये है कि हम जब आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं या कंपेटिटर का खरीदते हैं, एक फ्रिज के साथ हमें 7,000 रुपये का एक स्टेबलाइजर लेना पड़ता है। तो आपने क्या किया, फ्रिज को ही लो वोल्टेज पे डिज़ाइन करके दे दिया और उनकी 7,000 की कॉस्ट बची। तो डेफिनेटली ज़्यादातर कस्टमर आप पे स्विच ओवर हो जाएंगे, कंपेटिटर की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। देन कम्स सेट बेटर गोल्स फॉर योर बिजनेस। अब पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज कि आप अपने गोल जो है ना बेहतर कर सकते हैं। कैसे? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट, टाइम बेस्ड। आपके गोल्स हमेशा ये स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स का मतलब ये बनाया गया है स्मार्ट फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड। When your business owners set goals for their business, it's typically related to growth in sales or customers. But without market research, you won't be able to know if your goal is achievable and how to achieve it in the first place. You might say that you want to double sales by the end of the next quarter. How would you know if this goal is feasible if you don't know whether the size of your target market is more than twice the size of
your current customers base. Without knowing the current size of your potential market, you will just be setting arbitrary goals. कि आपने गोल सेट इस तरह से करने हैं मार्केट रिसर्च करके। फॉर एग्जांपल आपने सोचा जी अगले क्वार्टर में हमने सेल को डबल करना है। इस क्वार्टर में हमने 1000 यूनिट सेल किया और अगले क्वार्टर में हमने 2000 यूनिट सेल करने। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया तो आपकी मार्केट कम से कम डबल से ज़्यादा होनी चाहिए, ट्वाइस से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि अनएड्रेस्ड है। अगर वो आपने उसको नहीं किया, मार्केट का साइज ही छोटा है, पोटेंशियल ही नहीं है, तो 2000 यूनिट आप कैसे बेच सकेंगे? तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी मार्केट का साइज क्या है? फ्रॉम मार्केट रिसर्च। With market research, you will be able to determine the specific directions you want to grow your customer base. For example, do you want to grow your customers via a new untapped market segment, or do you still have room for growth among your current target audience? क्या आपने ऐसे कस्टमर को ऐड करना चाह रहे हैं जिसको आपने पहले कभी टच ही नहीं किया? वो कौन सा है? कि आपका फ्रिज बिक रहा था 40,000 का या 30,000 का। आपने जब मार्केट रिसर्च किया तो वहाँ की बाइंग पावर ही 20,000 से ज़्यादा नहीं थी। उस बंदे ने, एक गरीब आदमी है, उसने 10-10, 5-5, 100-100, 200, 300 रुपए जमा करके 20,000 रुपये जमा किए। अब वो फ्रिज लेने बाजार में जाता है, आपका फ्रिज जो है वो 30 से 40,000 में मिल रहा है, जबकि कंपेटिटर्स का फ्रिज जो 20,000 में, 21,000 में अवेलेबल है। तो व्हाट विल यू डू? आप एक छोटे मॉडल बनाएंगे। मार्केट रिसर्च से पता चला कि आपकी प्रोडक्ट महंगी है, जो कि कस्टमर की पहुंच से ज़्यादा है, तो आप एक स्मॉल मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि उनका टारगेट कस्टमर्स को, एक तो आप कस्टमर बेस इस तरह से बढ़ाएंगे कि एक नए सेगमेंट को आपने स्टिमुलेट किया। अपना न्यू मॉडल, छोटा मॉडल दे के, जिसकी प्राइस 20 से 21,000 रुपये है, वो आपका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा। या आपने पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें जो खामियां थी उनको दूर करके जब ने रीलॉन्च किया तो आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो बढ़ जाएगा, जिन्होंने छोड़ा हुआ था या फ्रस्ट्रेटेड थे। राइट, ये सब कुछ हो गया। आपने गोल्स भी सेट कर लिए, अब डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान होगी। रिसर्च कर लिया आपने मार्केट का, साइज भी चेक कर लिया, कस्टमर की नीड भी पता चल गई। नाउ डिसीजन मेकिंग इज इजी। व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट? द नीड फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च frequently comes up with making tough business decisions. Instead of having arbitrary criteria for the decision you make as business owner, you can always go back to your market research reports. Based on the report, will this decision lead to more customers? Will you be able to reach more people who are likely to buy from you? Will it be clear to them that your business can meet their needs? ये क्वेश्चंस हैं जिसको आप एड्रेस करेंगे कि अब आपकी रिसर्च आपके सामने है, पेपर्स के ऊपर है, आपको पता चला कि आपकी टारगेट ऑडियंस 2000 यूनिट की है, बट आपने अभी तक आपकी सेल होती 1000 यूनिट्स की। तो व्हाट विल यू डू? यू विल मीट द नीड ऑफ द कस्टमर, कि उनकी जो ज़रूरियात, जो चाहते हैं वो, कि हमें जी लोड शेडिंग में बर्फ़ ना पिघले फ्रिज में से, या छोटे साइज का फ्रिज जो कि 20 से 21,000 में होना चाहिए, वो आपको लॉन्च करना है। या आफ्टर सेल या कस्टमर केयर आपका जो था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, आपने उसको एफिशिएंट एंड इफेक्टिव करना है, ताकि जैसी कंप्लेन आए विद इन 24 आवर्स कस्टमर की कंप्लेन दूर हो जाए। While not all decisions should be solved by market research, many of them can be 100% डिसीजन जो है ना मार्केट रिसर्च पे नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मार्केट रिसर्च पे बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर टू स्पेंड योर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बजट, कहाँ खर्च करना है ये मार्केट रिसर्च से पता चलेगा। शहदादकोट में ज़्यादा करना है, लाड़काना में करना है, सोशल मीडिया पे करना है, ये प्रिंट मीडिया पे करना है, बिलबोर्ड पे करना है, न्यूज़ साइंस से करना है, ये आप कहाँ से पता चलेगा? मार्केट रिसर्च से। Whether there is demand for a new product you want to make, क्या आपकी कुछ नई प्रोडक्ट की ज़रूरत है? जैसे अभी हमने देखा कि परचेजिंग पावर लोगों की कम है,
आपका फ्रिज 30-40,000 है, तो क्या नया फ्रिज जो इसकी कीमत 20,000 हो वो लॉन्च करने की ज़रूरत है या नहीं? ऐसा हुआ। वेव्स में एक हमारा फ्रिज स्टार्ट हो रहा था तकरीबन कोई 40,000 30,000 से, तो उस वक्त ज़रूरत थी एक छोटे फ्रिज की। हमने छोटा फ्रिज लॉन्च किया जिसकी प्राइस सिर्फ 10,000 रुपये रखी। इट वॉज 2004। जब उसकी हमने 10,000 रखी तो वो हॉट केक की तरह सेल हुआ, और कभी वो हमारा हम उसकी डिमांड पूरी ही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब परचेजिंग पावर भी उस इलाके की जिसमें हम लॉन्च कर उसको मार्केट कर रहे थे कम थी। सो whether there is demand for a new product, if you should open a स्टोर फ्रंट इन अ न्यू लोकेशन। अब ये देखना है कि नया इलाका को बिल्ड हो रहा है, नया हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, क्या वहाँ पे आपको स्टोर बनाने की ज़रूरत है? ये मार्केट रिसर्च से पता चलेगा, क्योंकि वहाँ की नई सोसाइटी के लोगों को डाउनटाउन में सेंट्रल सिटी में आना पड़ता है परचेजिंग के लिए। उसके ऊपर उनका टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है, फ्रेट चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, और ये उनका टाइम और पैसे की बचत के लिए क्या आपने उनकी सोसाइटी के पास स्टोर बनाना फिजिबल है या नहीं, ये फैसला करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है जब आपके पास मार्केट रिसर्च मौजूद है। Which products to discontinue and which ones to merely improve। अब आपको मार्केट रिसर्च से पता करना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स, जैसे हायर की एग्जांपल दी कि उन्होंने प्लास्टिक की शीट लगा दी थी फ्रीजर पोर्शन में, तो उसको डेफिनेटली डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और नया फ्रिज बनाना चाहिए जिसमें एल्युमिनियम शीट वो वापस लगानी चाहिए। हाउ टू प्राइस ऑल योर ऑफर्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिसर्च से पता चलता है। There is a real need for market research because it provides you with solid facts. Through market research, you'll make more informed decisions rather than resting the fate of your business on guesswork. So market research से आप accurate decision ले सकेंगे, ना कि guesswork से। So this was all about the purposes of market research. Now, conclusion ये है, marketing research serves marketing management by providing information which is relevant to decision making. Marketing research does not itself make decisions, nor does it guarantee success. Rather, marketing research helps to reduce the uncertainty surrounding the decision to be made. अब मार्केटिंग रिसर्च जो है ना खुद से फैसले नहीं करती, और ना ये गारंटी करती कि ये लाजमी कामयाब होगा, लेकिन आपकी जो अनसर्टेनिटी है फैसला करने में कि टू बी और नॉट टू बी, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डायलेमा से निकलने के लिए आपको हेल्प करता है कि आपकी अनसर्टेनिटी कम करता है और फैसला करने को आसान बना देता है। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन। रिसर्च हम करते क्यों हैं? रिसर्च तभी करते हैं जब आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या है? आपकी सेल डाउन हो गई, यू हैव टू रिसर्च। आपको चेक करना है कि क्यों डाउन हुई है, या आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने मार्केट का चेक करना है कि इसका पोटेंशियल क्या है। लॉन्च कर दें, बहुत खर्चा होता है नई प्रोडक्ट लॉन्च करने में, तो पहले चेक करना है कि उसकी ज़रूरत मार्केट में है या नहीं। So, a research problem is a statement about an area of concern, a condition to be improved, a difficulty to be eliminated that requires a meaningful understanding and deliberate investigation. कि प्रॉब्लम जो है, रिसर्च प्रॉब्लम, वो क्या है कि देखने कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको इम्प्रूव करना है, कौन सी मुश्किल है उसको ख़त्म करना है, और एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्वेस्टिगेट। Clear statement of objectives will help you develop effective research. It will help the decision makers evaluate your project. You must have manageable objectives. 2 or 3 clear goals will help to keep your research project focused and relevant. क्लियर कट होनी चाहिए प्रॉब्लम क्या है। हमारी सेल इस साल कम हो गई है, अगले साल ज़्यादा करनी, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। या नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी, हम चाहते हैं कि लीडर बने पूरी कंट्री में। सो अनलेस द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज स्टेटेड इन unambiguous terms, it is difficult
for the marketing researcher for translate the decision maker's problem into research problem and study design. So problem described should have characteristics like, अब जो प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए. नंबर वन, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, सेल कम है, कंसाइज होना चाहिए, छोटे से छोटी सेंटेंस में आपको उसको डिस्क्राइब करना है, अटेनेबल होना चाहिए. सेल्स कम में तो कितनी करना है, इस साल 1000 यूनिट सेल किए, अगले साल 2000 ये चेक करना है कि मार्केट हमारी डबल से ज़्यादा है, तभी तो अटेनेबल है, वरना तो अटेनेबल नहीं होगा. मेजरेबल, देन यू कैन काउंट इन डिजिट्स के 1000 से 2000 पे चला गया. क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन में. ठीक है. अब नेक्स्ट कम्स, अच्छा हम अगर इसी की बात करते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, एक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन. एक जो डिसीजन मेकर्स होते हैं या मैनेजमेंट होता है, उनका प्रॉब्लम ये होता है, वो अपना मसला बताते हैं, लेकिन उसको रिसर्च प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म करना वो एक आर्ट है, वो रिसर्च से कर सकता है. फॉर एग्जांपल, किसी एक कंपनी ने कहा जी हमारी कॉफ़ी जो है ना, जो है वो चेक करना है कि 15 से 24 साल के बच्चे जो हैं या लोग हैं या यंग लोग हैं, to carry out a survey of young people in the age group of 15 to 24, they wanted information on the coffee drinking habits of these young people, how much coffee they drank, at what time of day, with meals or between meals, instant or ground coffee, which other beverages they preferred, and so on. ये था मैनेजमेंट प्रॉब्लम. इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें research problem में, so that will become the reason for an increasing percentage of young people in the age group of 15 to 24 consuming beverages other than coffee, particularly soft drinks, and simply never develop the coffee drinking habits. ये एक है मैनेजमेंट प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म किया. इसी तरह एक कंपनी ने अपने रिसर्चर को कहा जी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग सुबह के टाइम लेट आते हैं. जब रिसर्चर ने उसको थोड़ा सा गो थ्रू हुआ उस प्रॉब्लम से, उन्होंने कहा जी आपका प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके लोग सुबह लेट आते हैं, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है. तो सो देखिए उसी बात को, जब अपने एम्प्लॉयज़ लेट आएंगे तो यकीनन काम देर से शुरू होगा. जो 1000 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते थे, तो वो लेट आने की वजह से 500 बना रहे हैं, या एब्सेंटीज करने की वजह से कम प्रोडक्शन हो रही है. तो सो रिसर्चर ने उसको ट्रांसफॉर्म क्या किया, मैनेजमेंट प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट किया, योर प्रोडक्टिविटी इज लो. और मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारे स्टाफ जो है लेट आता है या छुट्टियां ज़्यादा करता है. तो सो ये है फ़र्क एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम में और रिसर्च प्रॉब्लम में. अब आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च. हम अगर इसको देखते हैं तो दो मेजर टाइप्स हैं, फंडामेंटल रिसर्च और नंबर टू अप्लाइड रिसर्च. फंडामेंटल क्या होती है, मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी. फंडामेंटल की एक जनरलाइज होती है. फॉर एग्जांपल, gathering data that how many men and women infected from COVID-19. ये जनरलाइज रिसर्च चेक करना है कि पूरे पाकिस्तान में कितने मर्द और कितने औरतें इन्फेक्ट हुई कोविड-19 से. इससे कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, ये डाटा इकट्ठा करने, ये जनरलाइज रिसर्च है. लेकिन ये रिसर्च बाद में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आ सकती है. या फंडामेंटल रिसर्च की एक और एग्जांपल, कितने बच्चे इन्फेक्ट हुए या कितने बूढ़े इन्फेक्ट हुए, रूरल एरिया में कितने इन्फेक्ट हुए, अर्बन एरिया में कितने इन्फेक्ट हुए. तो ये एक जनरलाइज रिसर्च है. और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, वो एक इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है. इसी की एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 की. तो अप्लाइड रिसर्च क्या होगी, एम्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, रिसर्च टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर कोविड-19. अब ये अप्लाइड रिसर्च है कि अब वैक्सीन तैयार करना है इमीडिएटली ताकि इस वायरस से जान छुड़ाई जाए. सो दिस इज अप्लाइड रिसर्च.
Hope you understood this. Now comes research model. रिसर्च मॉडल पे हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को. 3C मॉडल याद रखिएगा. 3C मीन्स योर कस्टमर, कंपनी एंड कंपटीशन. कि ये तीन चीज़ें हैं जिससे आपकी जिस पे आपकी रिसर्च बेस करती है. कंपनी क्या है? यू फर्स्ट नीड टू नो योर कंपनी वेरी वेल. Define or learn the vision and mission, the location, the logo, the organization and its culture. Finally, the core product and value. A company needs to carefully evaluate both the short term and long term strategies to beat competition and have a sustainable competitive advantage. और आपको कंपनी को पहले पता होना चाहिए कंपनी की इसमें प्रोडक्ट कौन सी हैं, इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है, विजन क्या है, लोकेशन क्या है, लोगो क्या है और लोगों की ज़रूरियात को ये कैसे एड्रेस करती है, कंपनी को जानना ज़रूरी है. नंबर 2, कस्टमर. Define your target audience, deeply research the type of customers, their demographics, their spending powers, their habits, and their needs. A common mistake that companies do is to consider the shareholders as their customers. ये सबसे बड़ा मसला है. शेयर होल्डर्स आपके कस्टमर्स नहीं होते, उनको जो समझ लेते हैं वो गलती करते हैं. इंस्टेड द मेन फोकस शुड बी ऑन द कस्टमर्स एज इट इज द customer who can improve the performance of the organization and cause the failure of the organization. ये कस्टमर ही हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब भी कर सकते हैं और आपको फेल भी कर सकते हैं. अगर वो आपकी प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे तो यू आर सक्सेसफुल. अगर उन्हें खरीदना बंद कर दी या आपने उसमें प्रॉब्लम क्रिएट की, क्वालिटी डाउन कर दी, प्राइस बढ़ा दी, तो यू कैन गो टू फेलियर. नंबर 3 एंड लास्ट component of the model 3C model is competition. To be successful, you need to know your market and especially your competitors. You want to learn how they operate, what marketing tactics they use, who their partners are, what financial position they are, who their employees and customers are. You can learn from your competitors' mistakes. Model what works for them, discover from the new market or opportunities. अब अपने कंपटीशन को देखें, कंपेटिटर्स को देखें, उनकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उनके एम्प्लॉइज़ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको वो कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट लोग क्यों लाइक कर रहे हैं, उनकी खामियां क्या हैं, उनकी बुराइयां क्या हैं. आपने उनको सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, मार्केट करना है और अपने टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है. तो दिस वाज ऑल. here it ends. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट क्लास होगी. Goodbye for then, इंशाल्लाह.